Hello everyone, this is your Mistri sir. Welcome to my channel Mistri sir classes. In this sessions I am going to discuss another very important topic, that is conductance of electrolytic solution. So what about electrolytic solutions? Before we start the topic, I want to tell you some basic informations about conductance of electrolytic solutions. And one more thing is now basic questions where do come from conductance of electrolytic solutions, and what is the importance of electrolytic solutions on the behalf of electrochemistry. So I want to tell you, my dear friends, now beginning of the chapter I already told you इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को बेसिकली हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया था. तो फर्स्ट इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, देन गैल्वेनिक सेल एंड कंडक्टेंस. दैट मीन्स इलेक्ट्रोलाइटिक सेल which is electrical energy transformed into chemical energy, that is called electrolytic cell. And what about galvanic cell? That is which cell chemical energy transformed into electrical energy called as galvanic cell. And इलेक्ट्रोलाइटिक सेल और गैल्वेनिक सेल को बेसिकली हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के फॉर्म में इंट्रोड्यूस करते हैं. एंड व्हाट अबाउट इलेक्ट्रोकेमिकल सेल? नाउ यू कैन सी हियर देयर इज ए इलेक्ट्रोलाइटिक सेल. अब इस इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के जो कंडक्शंस में जो सब्सटेंसेस फिल करी जाती है या मीडियम फिल करी जाती है, उसी को हम लोग कंडक्टेंस बोलते हैं या इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं. इलेक्ट्रोलाइट में बेसिकली जो इलेक्ट्रोलाइट होता है वो इलेक्ट्रॉन के कंडक्शंस में क्या करता है, हेल्प करता है. नाउ यू कैन सी, आई होप यू अंडरस्टूड वेयर डू कम फ्रॉम कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल. मतलब कोई भी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होगा, सपोज इलेक्ट्रोलाइटिक सेल एज वेल एज गैल्वेनिक सेल, तो उसमें एक मीडियम होती है जिससे इलेक्ट्रॉन का क्या हो सके, कंडक्शंस हो सके या आयंस का फ्लो हो सके. और अगर आयंस का फ्लो होगा तो डेफिनेटली इलेक्ट्रॉन का माइग्रेशन या कंडक्शन होगा. So I hope you understood where do come from conductance of electrolytic solutions. एंड बेसिकली जो मीनिंग होता है कंडक्टेंस का वो होता है आयंस फ्लो. दैट मीन्स वो आयन का फ्लो करता है उस सिस्टम में. एंड बिफोर डिस्कस कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस वी विल डिस्कस सम बेसिक और इम्पोर्टेंट टर्म्स. सो कंडक्टेंस को समझने से पहले कुछ टर्म्स है जिसे जानना बहुत ही ज़रूरी है और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है फॉर योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स लाइक नीट, आईआईटी, जेएम एंड थ्योरेटिकल पोर्शंस. डायरेक्टली यहाँ से यूनिट पूछ लिया जाता है कंडक्टिविटी का, सेल कांस्टेंट का. कई बार अक्सर इस सेक्शन से क्वेश्चन पूछा ही जाता है. सो फर्स्ट रेजिस्टेंस, दैट मीन्स कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन जो टॉपिक है, इसके बिहाफ में इतने टॉपिक्स को अपन को कवर करना है, लाइक रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी, कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी, सेल कांस्टेंट, रिलेशंस बिटवीन कंडक्टिविटी, सेल कांस्टेंट एंड रेजिस्टेंस, क्लासिफिकेशंस एंड मेजरमेंट ऑफ कंडक्टेंस ऑफ एनी इलेक्ट्रोलाइटिक cell, any electrochemical cell, not a electrolytic cell. And so first of all we will discuss the resistance. Now you can see here resistance which is represented by R. That means resistance is directly proportional to its length and inversely to its area of cross sections. Now what about length and area of cross sections? That means electrode का जो distance होता है ये क्या होता है आपका length. That means in electrode का जो distance है उसी को length बोलते हैं और area जो होगा दैट मीन्स जो इलेक्ट्रोड कितना एरिया को कवर किया हुआ है उससे रिलेटेड होता है. नाउ यू कैन सी आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू ए. अगर इस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल साइन को अगर हटाना है तो यहाँ पे कोई एक कांस्टेंट राइट करना होता है, दैट इज रो. दैट मीन्स रेजिस्टिविटी एंड वी कैन फाइंड द यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस, दैट इज ओम, and which is also known as ohm, 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 maho, etc. And another is resistivity. Now many times many people does not understand what is the difference between resistance and resistivity. So I can elaborate here on the behalf of unit. Now you can see
इस जो फॉर्मूलेशन से आर विच इज इक्वल्स टू रो एल अपॉन ए, अगर यहीं पे मैं रेजिस्टिविटी फाइंड करूँ तो यहाँ पे भी हो जाएगा, बट जो यूनिट है वो क्लियर नहीं होगा. नाउ यू कैन सी इट इज डिफाइंड एज द रेजिस्टेंस ऑफ substances of 1 meter length with the area of cross sections equal to 1 meter. So here it is very important. Now you can see the unit of rho of resistivity, that means rho which is equals to r a upon l. just इस इक्वेशन को हमने क्या किया है, ऐसे सॉल्व किया है, और फाइनली व्हाट वी गेट द एसआई यूनिट. नाउ सी ओम, आर का जो यूनिट होता है वो क्या होता है, ओम, एंड ए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दैट इज मीटर स्क्वायर, एंड यू कैन ऑल्सो राइट एज सेंटीमीटर स्क्वायर. सो आई एम taking meter square. Now rho which is equals to ohm meter, ohm meter, 1 m cancel हो गया, ohm meter. So here it is basic difference. So this is a big difference from resistance and resistivity. Resistance which is known as ohm only, and resistivity that is ohm meter. So I hope you understood difference between resistance and resistivity. And next is conductance, which is represented by G, and G is inversely proportional to R. Now there is a basic and fundamental difference. So I want to tell you my dear friends, basically इस टॉपिक को आप अच्छे से सीन करें, अंडरस्टैंड करें. कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो कि आइडेंटिफाई करना ज़रूरी होता है. कंडक्टेंस विच इज़ रिप्रेजेंटेड बाय जी, जी इज inversely proportional to resistance. So what happened is there, now you can see अगर इसका inversely है तो इसका जो SI यूनिट क्या होगा, just like ohm inverse. Now you can see G which is equals to 1 upon R, और R को हम लोग इस टाइप से राइट कर सकते हैं, R which is equals to EL upon A. सो इसको हम सेपरेट आउट करके भी राइट कर सकते हैं. अगर इसकी SI यूनिट की बात किया जाए तो क्या होता है, साइमेंस ओनली. इट कैन ऑल्सो रिटन एज मोहो, जस्ट अपोजिट ऑन द ओम, ओम महो. तो यहाँ पे सॉरी ये नहीं होगा, महो. एंड ओम इनवर्स, अगर इसके इनवर्स है, कंडक्टेंस रेजिस्टेंस का इन्वर्स है, डेफिनेटली इसका यूनिट भी इन्वर्स ही होगा. सो आई होप यू अंडरस्टूड. एंड नेक्स्ट वन इज कंडक्टिविटी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी कॉम्पिटेटिव एग्जाम एज वेल एज थ्योरेटिकल एग्जाम्स. नाउ यू कैन सी very carefully, conductivity which is represented kappa, that is called as kappa and represented just like a sign of K, is inversely proportional to resistivity. Now you can see here also known as kappa, and which is also known as specific conductance. So kappa which is equals to 1 upon resistivity. Now lastly I already told you what about resistivity. Now you can see SI unit 1 upon ohm centimeter, and you can also write here meter. So I wrote already centimeter, so I can discuss centimeter form. Now see K which is equals to ohm inverse and centimeter inverse. So there is a very very important ohm inverse, centimeter inverse, and we can write here also ohm inverse, meter inverse. So these things we can write another form. Now see, नाउ इसको एक डिफरेंट तरीके से भी फाइंड किया जा सकता है ना. उसी के कप्पा विच इज इक्वल्स टू 1 अपॉन रो, और यहाँ पे रो का वैल्यू अगर मैं पुट करूँ, तो जी, अगर मैं इस कप्पा की वैल्यू को अगर कंडक्टेंस से रिलेट करूँ तो जी विच इज इक्वल्स टू ए अपॉन रो इंटू एल. सो फाइनली व्हाट वी गेट, दैट इज के ए. अगर इसको मैं सॉल्व करूं तो क्या हो जाएगा, के ए अपॉन एल. दैट मीन्स जी कंडक्टेंस विच इज इक्वल्स टू के ए अपॉन एल. और अब यहाँ पे अगर मैं वैल्यू पुट करूँ जी, दैट मीन्स कंडक्टेंस की वैल्यू क्या होता है, बेसिकली साइमेन, जिसको हम लोग एस से रिप्रेजेंट करते हैं. साइमेंस मीन्स एस इंटू जी इंटू एल. एल मीन्स लेंथ, सेंटीमीटर यू कैन राइट ऑल्सो मीटर, एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दैट इज सेंटीमीटर स्क्वायर. तो सेंटीमीटर, एक सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएगा, दैट मीन्स साइमेन सेंटीमीटर. सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. साइमेन सेंटीमीटर,
सो आई होप यू अंडरस्टूड ऑल थिंग. ओम अगर इसको मैं राइट करूँ ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स या साइमन सेंटीमीटर इनवर्स, सो यू कैन राइट द बोथ ऑफ द फॉर्मूला. नेक्स्ट वन इज द सेल कांस्टेंट. So what about cell constant? It is represented by G star. The quantity of L upon A, L that is length, that means distance between two electrode, and A that is area of cross sections, is called as cell constant. That means G star, which is equals to L upon A. Now what about L upon A? Now you can see L, which is equals to meter, and area, that is meter square. So what is the unit of cell constant? That is meter square. So I hope you understood all things: cell constant, resistance, resistivity, and out of all these terms, which is very very important, that is conductance, kappa conductance, that is Simon centimeter square, ohm inverse, or centimeter inverse. The next one is relations among conductivity, which is known as K. Conductivity which is known as K, that means kappa of the solution in cell constant, that is G star, and resistance R. That means kappa which is equals to cell constant upon R. अगर इन तीनों की रिलेशंस की बात किया जाए कि कंडक्टिविटी, कंडक्टेंस, सेल कांस्टेंट और रेजिस्टेंस में क्या रिलेशंस होता है, तो इस फॉर्मूला से भी हम रेजिस्टेंस, सेल कांस्टेंट या कंडक्टिविटी इजीली फाइंड कर सकते हैं. एंड नेक्स्ट वन इज measurement of the cell constant. Now see, measurement of cell constant, as we know R, which is equals to rho into L upon A, which is also we can write here 1 upon Ka. After that we can relate K, that means R value, K value. Now what about K value? That is kappa L upon A upon R, L upon A upon R. अगर इस दैट मीन अगर इसको रिलेट करें इन दोनों से, इन दोनों को अगर एक साथ एसोसिएट करके राइट करें तो क्या हो जाएगा, K विच इज इक्वल्स टू G स्टार अपॉन R. G स्टार अपॉन R, G स्टार दैट मीन्स इसका वैल्यू होता है L अपॉन A का वैल्यू क्या होता है G. आई कैन मेंशन हियर ऑलरेडी. So I hope you understood what is the relations between conductivity, cell constant and R. And one more thing is very very important, it is measure कंडक्टिविटी की we need. अगर अपन को कंडक्टिविटी फाइंड करना है तो ऑलरेडी रेजिस्टेंस और सेल कांस्टेंट का वैल्यू पता होना चाहिए. मतलब इन तीनों में से किसी भी दो डिटर्मिनेशंस का वैल्यू अगर फाइंड आउट हो तो डेफिनेटली थर्ड वैल्यू इजीली कैलकुलेट किया जा सकता है.